अब तक आपने देखा कि होम शेफ चैलेंज कैसे शुरू हुआ। होम शेफ चैलेंज ग्रैंड होटल नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसमें पूरे भारत से चुने गए 9 होम शेफ्स ने हिस्सा लिया। 3 सेलिब्रिटी शेफ्स ने प्रतियोगिता में प्रतिभागियों की कुकिंग स्किल्स को जज किया, जबकि सम्मानित अतिथि डॉक्टर पुष्पेश पंत ने उन्हें अपने अनमोल सुझाव भी दिए। प्रतियोगियों ने मिस्ट्री बॉक्स से मिले चैलेंज के अनुसार विशेष व्यंजन तैयार किए, जिन्हें जजेस ने गहराई से चखा और परखा। अब क्या होगा, कौन बनेगा होम शेफ चैलेंज का विजेता, चलिए जानते हैं इस एपिसोड में। वेलकम बैक। वेल, अब तक हमने देखा कि खाना कैसा बना है, शेफ नीशू किसको हेल्प कर रहे थे, शेफ ध्रुव किसके साथ सेल्फी खींच रहे थे, एंड आवर प्रिंसिपल शेफ शेफ साबी गौराई सबको किस तरह से इंस्ट्रक्ट कर रहे थे। लेकिन इन सब के बीच में विद इन 60 मिनट्स दे हैव ऑल मेड 2 रेसिपीज। नाउ इट्स टाइम फॉर टेस्टिंग एंड सी व्हाट ऑल द रिव्यूज आर। So, मस्ती के साथ साथ में टेंशन भी हो रही थी हमें, बट हमें थोड़ा सुकून मिला जब हमने देखी कि प्लेट्स एटलीस्ट बन के बाहर आ रही है। आई थिंक इट गिव अस कॉन्फिडेंट दैट ओके वी हैवंट डन एनी मिस्टेक, हमने कोई गलती नहीं की थी डक देके। आई थिंक वी हैड आवर कॉन्फिडेंस। आई थिंक इट्स वर्थ इट एट द एंड ऑफ द competition. Explain your duck dish first. Like crispy shredded duck breast, saute veggies and sunny side up and cranberry juice. This is hot honey broccoli with sriracha sauce. आपने पहले कुक किया है? आपने कैसे कुक किया था पहले? सेम ऐसे किया था? तो आपको प्रैक्टिस था पहले से? Good one. No, very nicely. Well done. I mean, duck is nice and pink and very soft. And good combination with cranberry, as already said, Dhruv. So good. I like the fried egg idea on top also. But that was adding a lot of moisture. आपकी दोनों डिशेस बहुत अच्छी थी, बट कहीं ना कहीं वो जो आंख से देखने की जो चीजें होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमने पहले आपको बताया भी था कि हम पहले आंखों से खाएंगे। यू नो, वी लुक एट प्रेजेंटेशन फर्स्ट। सो आपकी कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन थोड़ी 19 रह गई, आई मस्ट टेल यू। This is gochujao with rosemary, grilled breast, and this is orange zest cooked with orange juice over the orange juice, and this is over the caramelized onions and mushroom. You have taken inspiration from bibimbap, right? That Korean bibimbap? Yeah. Only rice is missing. Otherwise, good textured vegetable. I can see good color on the plate. Duck sounds very good. I mean, tastes very, very nice. यार नैना में सबसे अच्छी बात थी कि उसने डक के लेग और डक के ब्रेस्ट दोनों के 2 डिशेस बनाए। She is inspired by K-pop. Very nice. Sauce also sounds very good. But excellent choice of orange. Nana has done something really right, where she has picked the best accompaniment or the condiment which goes really well with duck, which was orange. And I love the spice hint that I'm getting So it with is the orange. cooked with spice, our pure spice red chili, just the basic red chili with yes, a little bit of peanut butter. How can you miss spice in life? पहले लगा ऑरेंज सॉस है तो आई वाज वेरी लाइक यार नाइस एंड स्वीट एंड टैंजी। उसके बाद तो तो धमाका आया है उसका। टू मच। वेल डन मैम। Thank you so much. The duck something is decent. I think everybody's Also, the vegetables are nice and crisp. Huh? Very good. Excellent. Very good plating, by the way. Thank you. Very clean plating. Shall please explain your dish? Actually, ये जो मैंने बनाया है, it's a pan-seared duck breast. Okay. And the second one is a cheese got grilled cheese cottage skewer. So I'll just try some cranberry sauce. What's the sauce for the duck? It's sriracha sauce. Sriracha sauce. And very nice. I must tell you, the duck is looking absolutely pink. Oh, thank you, chef. So very well and good cutting also. Duck amazing. The cheese is nice, but the paneer is something which I didn't understand. But this is exceptional. Thank So you. far. I like the way you have cut it. Pan-seared, rested well. Blood not coming out. Side salad, good idea of putting orange. Broccoli is nice and crisp.
Shal has cooked something which is very, 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 very nice in a way. The duck was absolutely pink, which was expected out of any chef. To a surprise, हमारे लिए बिल्कुल अचंभे की बात थी कि how she would have cooked the duck so perfect. Asha, there's one more. The first thing I would talk about the duck, which was the prime ingredient today. So I tried to make it like a Goan style duck. And this I have made with orange squash, the sweet, and with jaggery. I have not used the sugar. The squash खीर जैसा बनाया है. Yeah, for this I'm coming out and giving you a hug. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. ये पार्टी आपने किससे बनाया? मैंने zucchini से green वाली. इसमें बाइंडिंग क्या है? बेसन. बेसन थोड़ा कच्चा रह गया. हाँ, थोड़ा सा कच्चा रह गया. पर आपने बेसन को भूना नहीं? बेसन को पहले भूना नहीं था, कच्चा ही. केरला और साउथ इंडियन तमिलन में नहीं है, because we didn't have the grinders to grind our other masalas. So for this one, that was the quick one to use the available ingredients there. Correct. So that was the thought. But Goan क्या है? मतलब is there anything Goan in it? Goan is they generally cook the gravies with आप पॉपी सीड यूज करते हैं, हाँ poppy seeds. काफरियल कर लेते हैं, कुछ गोवन हो जाता ना, तो गोवन एलिमेंट समझ में नहीं आया. But sometimes less is more. अगर आप ये नहीं करते, I think इसकी वजह से everything has got very negative. This too would have been, The hero good. dishes. Yeah. इसकी जरूरत भी नहीं. But this is outstanding. I must compliment you for that. Okay. Thank you. Coming to Seema ji, I must tell you, she's very sweet. I gave her a beautiful hug actually in the show also, because I love जो उन्होंने dessert जो sweet जो बनाया था, जो मीठा बनाया था. To our surprise, I think Seema auntie has done something really wrong. At the same time, she has done something very good. उन्होंने dessert बहुत बढ़िया बनाया था, जिसके लिए Chef Sabi and Chef Nishu was also vouching, which was amazing. But surprisingly, उनका duck नहीं सही बना. This is duck in the pond, and this is protein bomb. Wow. Because it is based on besan and it's full of protein, so I just gave it in Acha, the wow. And what is the stuffing? stuffing. It's all stuffed inside. We have Acha, all these cashews, vegetables which are there here. I mean, broccoli, everything is. cashews, apricots. And I like the pineapple idea on the Yes. base. Beautiful. Will you please explain the sauces for Mega both the spouse dishes? type chef. Yes, it's orange and lychee sauce, Okay. and I've already marinated the duck Okay. with spices and some lemon juice, some orange juice. ये बॉम्ब को खोल दे. Yes, yes, of course. अनीशा, मुझे को डाउट लगा क्योंकि उसने अपना डक को रेस्ट नहीं किया. डक में रेस्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई थॉट एंड आई थिंक दैट ओनली हैपेंड एट द एंड दैट हर डक वाज वेरी च्यूई. बहुत अच्छा, very nice. I like the broth. Duck थोड़ा underdone है. शायद वो पानी में इसके लिए. हाँ? क्या लगता Swimming in the pond, right? Pond. Oh, nice. Looks nice. इसी को 2 प्लेट में डाल देते तो हो जाता है. या सिद्धांत की डिश भी बड़ी अच्छी थी, बट आपने ये प्रॉब्लम किया उसमें कि आपने दोनों डिशेस को एक ही प्लेट में दे दिया. This is sheared duck breast with some sauteed veggies and leafy salad. What's the sauce for the duck? The apple and the pineapple calamus sauce. Where is the sauce? You know, Oh, it's underneath. Invisible sauce. Mr. India sauce. Where is the sauce? मेरे को साइड में लेके आओ. और कर लेते हैं ना यहाँ पे. A lot of people bought like that. Yeah. है ना चाहते हो प्लीज ले आओ. ले आओ. ले आओ, ले Please आओ. put Let's some taste sauce the on top. Siddhant, I think maybe he acted clever or maybe he's very dumb. He has just put 2 dishes together, whereas the mandate was they have to do 2 dishes. अगर वो 2 dish कर देता तो he would have won because his dishes were great. The sauce is great, chef. Duck Sauce is great. fine. Texture of duck is nice. Leafy salad is a good idea. Fiber, the peppers are quite nice. Aloo कहाँ गया? You're supposed to do aloo. Mashed potato but half. problem was that in the Okay. single soup, that's why.
Oh, Got it. okay. I was trying to make another thing also, chef, but वो हुआ नहीं. तो क्या था जो आपकी ड्रेसिंग्स थी वो लाजवाब थी, मतलब we all went like over gaga. I must tell you, we were in top of the world by, you know, after we ate this lovely dressing that you created. But कहीं ना कहीं आप उस 2 प्लेट में उसको डाल देते तो आज आप होते हमारे टॉप में 100%. तो आपकी वो गलती थी. Chef, so I've done the duck breast, which is honey glazed with coriander, aniseed just to give a flavor to it. Exotic. And I've used a tossed some tomato just to cut through the flavor profile. And my second dish is the peanut butter spaghetti that can be served cold and as well as hot with a little bit of the Asian flavor of the spices. Drizzled with some sesame seeds. Tastes very good, huh? Yeah, so Even you if can it's have cold. this cold as well as like when you just... No, I love the Asian flavor that is coming out of spaghetti. Very beautiful. Chef, ये आप try कर सकते हैं? Absolutely. अच्छा, cold spaghetti का क्या फंडा है? So this is something which can be Like comfort. very comfort. Also, this can मतलब cold खिचड़ी. serve as a अच्छा, option like a pasta to give salad. your kids in the tiffin box. Okay. Yeah, we were completely like surprised and also very excited to see the creation coming out of everyone. Especially मैं मन्नू की बात करूंगा जिसने हनी ग्लेज डक बनाया यार. मतलब इतना मुश्किल है हनी ग्लेज डक बनाना और उसने वो 1 घंटे में बना दिया. Hats off buddy, hats off, well done. अच्छा, हनी ग्लेज क्या कहाँ चला गया आपका? हनी ग्लेज गायब. I Glaze. Glaze. Dried in the pan. Yeah. गोवा से आता था ड्राई हो गया. Glaze. Hey, crispy skin. Thank you. यार, not bad. Yeah. मैंने ये भी देखा कि उन्होंने रीजनल इंडियन भी बनाया. कुछ लोगों ने अच्छा तरीके से फ्रेंच कुकिंग टेक्निक को अडॉप्ट किया जहां उन्होंने फैट को रेंडर किया, क्रिस्पी स्किन सर्व किया. जो जीता ना, आई एम टेलिंग यू दैट डक दैट वी टेस्टेड चुमेश्वरी, दैट वाज आउटस्टैंडिंग. So I can explain this. This is kind of a pulled apart, deconstructed duck leg, which is basically I pulled the meat off. I added boiled potatoes, cheese, butter to have that moisture. I crumb coated it and then fried. And then this is paired with a lychee sauce, which is sweet and spicy. This one is stuffed mushrooms with a side of lemon sauce, pepper sauce. It's cooled down a bit and then served with salad. Very good combination. I like the caramelized. This is lychee. Like that is what one suggestion that chef gave, that lychee goes well with duck. So I use lychee, and then this has. But good, yeah, very good. I love the sauce. Really good, contrast. The mushroom thing worked very well. Duck you pulled, recreate, reconstruct, recreate. Very good. Good one. मनमीत ने भी डक और स्वीटनेस को बहुत अच्छी तरह कंबाइन किया. उसने सीजनल फ्रूट लिया जो कि लीची है और लीची के साथ उसने बहुत ही प्यारा सॉस बनाया और उसने डिकंस्ट्रक्ट किया. नेक्स्ट वाज हर फेवरेट एक्चुअली दैट शी प्रेजेंटेड टू अस. इट वाज अ स्टफ्ड मशरूम विद लेमन सॉस. जनरली लेमन सॉस मशरूम के साथ वी डोंट टेस्ट, but that dish again was kamal. I mean kamal, I must tell you. Manmeet, job well done. मैम दूसरा डिश कौन सा है आपका वो बताइए. ये मेन डिश है, ये accompaniment. Accompaniment is not a dish. देखो पराठा can't be considered as dish. So it is very amazing looking, all looking very nice. ये ग्रेवी है, सूख गया है अभी, क्योंकि आप ऊपर डाल नहीं सकती ना. It is I mean inspired from Kerala curry. लेकिन उस पे चेंज जो किया है थोड़ा ऑरेंज जूस कैरमलाइज करके इसका बेस मैंने ऑरेंज डाला है. Yeah, Reena ji, I have been seeing her cooking amazing Bengali dishes, just to let you know. और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बड़ी बेहतरीन सी रोटी बनाई और उसके ऊपर उन्होंने बहुत सुंदर साउथ इंडियन फ्लेवर बनाया डक के साथ. वो था चेटीनाड. उनकी मिस्टेक ये थी कि उन्होंने एक ही डिश बनाया, बट ऑल इन ऑल ग्रेट फ्लेवर, वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट अदर पीपल कुक्ड. और जैसा मैंने बताया कि साउथ इंडियन और गोवन
जो कोस्ट ऑफ इंडिया है वहां पर डक पकाने का तरीका है। तो इट वाज ए वेरी अमेजिंग अटेम्प्ट बाय यू। बहुत बढ़िया, वेरी डिफरेंट टू व्हाट पीपल आर कुकिंग। और वो कड़ी पत्ता और कोकोनट का बहुत अच्छा, बहुत वाइब्रेंट टेस्ट है। poultry in Indian spices. Good one. Good. You have to good one. Good. Let's clap for it. It was a brilliant idea. I think you're very smart and very clever, you know, because of choosing the best recipe for this, especially the duck leg. सारे डिशेस में आपको ये बताना चाहता हूँ कि सब डिशेस अलग थे और हमें 9 बहुत बेहतरीन डिशेस मिले और वो 9 के लिए चूज करना कौन जीता कौन हारा was again, you know, some kind of mystery for us, for us as jury. तो आप समझ सकते हो हर एक टाइमलाइन पे एक वो चीज आ रहा था लम्हा कि यार अब किसको जिताएं। टेंशन हो रही है, कौन होने जा रहा है हमारा विनर। सबने खाना अच्छा बनाया, मैंने भी टेस्ट किया, बहुत अच्छा था, किसको छोड़ें। सो फाइनली विनर्स का लिस्ट आ चुका है और वो काउंटडाउन भी खत्म हो चुका है। अब वो घड़ी है जहां पे सबकी धड़कनें बढ़ चुकी हैं कि कौन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है, राइट शेफ? Yes, absolutely. I think this is the judging time, but I must congratulate everyone for cooking so well. शेफ निशांत तो पर्सनली अपने 9 डिश ट्राई किया है। ही इज ऑलरेडी डेस्परेट, गैस्पिंग कि सही अभी मैं बता दूं। वी आर सेइंग पहले फेलिसिटेट द एंटायर टीम बिकॉज एवरीबॉडी हैज डन सो वेल, ऑल 9 कंटेस्टेंट्स। सो बिग राउंड ऑफ हैंड फॉर ऑल द नाइस कंटेस्टेंट्स। Winners? Yes, please. Now winner. But before that, I need to thank Mr. Michelle Koopman for being so supportive, sir. And it was pleasure of TV9 Digital to be part and associated with this. Thank you so very much. 2 words for us. I remember, living in Australia, was the general manager of the Grand Hyatt Melbourne, and that's where MasterChef started, So George, Gary, all of those guys, Shannon Bennett, they became good mates. So I saw all the beginning, and I think what an amazing job they did to bringing actually cooking to the forefront, to start to appreciate the food of your mum, the food what you like, the authentic food. So I think it's a fantastic thing. It brought lots of people to the kitchen. It brought lots of people, to see the fun of cooking. So I hope you all had a fun day, because that's the most opportunity, and we're looking forward to participating in the future. And chefs, well done. Thank you. well, कोई भी इवेंट या कोई भी प्रोग्राम तब तक अधूरा रहता है जब तक कि उसमें टीम वर्क ना हो। In that, not only team, I would say even our sponsors must be thanked. So I should thank US Poultry for providing ducks, and we had R Pure मसाले, जिनके बिना ये कोई भी खाना बनाना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वाकई में मानना पड़ेगा R Pure के मसाले वाकई में उच्चतम कैटेगरी के हैं। They are really pure. It's a must recommendation. And definitely our gifting partners, we have Vanity Wagon and Rio. Well, thank you so very much, क्योंकि आप लोगों के पूरे सपोर्ट के बिना this event was not possible at all. Okay, so let's So the third spot is Manmeet. Big round of applause for Manmeet. Now, first runner-up. Nana. So I think, we all had the same opinion about this. So the winner of today's competition is Shell. The technique took the limelight and Shell won. At the same time, I really appreciated what Manmeet and Nana also cooked. Why Home Chef Challenge? What is the initiative is all about? The initiative is basically to know our talent. Exactly. पैन इंडिया ये एक छोटा सा हमारा प्रयास था कि हम जान पाए कि कहाँ पे कौन सा टैलेंट छुपा बैठा है। To know the young talent, to know everyone. So we had no age boundaries at all. We invited with open arm. और इसके साथ ही हमें बहुत ज्यादा प्यार भी मिला और बेतहाशा एंट्रीज भी।
This is a very good platform for all the home chefs. Good food is a happy family, and I think you guys played a very important part in it. So, well done. TV9 Food9 has actually brought together like one of a kind home chef experience for people who are actually passionate about cooking. बहुत जरूरत है ऐसे फंक्शंस की जिसमें जो है ग्रास रूट से लोग बाहर आए. So I think it's a great initiative to bring some people out, bring the talent out and encourage people. This was a good chance for all the people who love making food. It's really exciting to see people from different professions to compete here for their passion. It was very interesting concept and I would love to see something more like this coming up. It's a great platform for home chefs and people who love to cook. I think all of us are home chefs somewhere, trying to make our dishes, trying to see who eats them or doesn't eat them.